टुडेस टॉपिक इज टेक्सटाइल टेस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है टेक्सटाइल टेस्टिंग। हम लोग जो प्रोडक्शन करते हैं, जो उसमें उसकी क्वालिटी चेक, उसकी किस तरीके से मटेरियल बने हैं, कोई फॉल्ट है कि नहीं, किस हमारे कस्टमर कौन है, कौन से कंट्री में हम सामान भेजेंगे, उस कंट्री का क्या प्रोटोकॉल्स है, ये सब जांच करने की कपड़े को स्टार्टिंग फ्रॉम द फाइबर, जब यार्न बनने से पहले जो फाइबर है, फाइबर टू फैब्रिक अपरल, इसको जांच करने का जो प्रोसीडियर है, प्रोसेस है, उसको हम क्या बोलते हैं? टेक्सटाइल टेस्टिंग। तो किस आधार पे करते हैं? उस आधार को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड या प्रोटोकॉल्स। आज हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। सो ऑब्जेक्टिव क्या है? इंट्रोडक्शन। टेक्सटाइल टेस्टिंग इज द application of engineering knowledge and science to the measurement of properties and characteristics of the conditioning affecting textile fibers, yarn, and fabrics. It involves the use of technique, tools, instruments, and machines in the laboratory for evaluation of the properties of different forms of textile. Quality control is concerned with the evaluation of test data and its application to the control of textile process, raw material, intermediate products, and final products. It concerned not only the quality level but also cost of the maintaining this level. Testing provide background and data, and quality control applies for the results. तो ये टेक्सटाइल टेस्टिंग का एक ऑब्जेक्टिव है, एक इंट्रोडक्शन है कि ये क्या करते हैं। जो फाइबर हम यूज़ करेंगे, वो फाइबर यान बनने के लिए उसका क्षमता है या नहीं, वो जानकारी मिल जाता है। जब यान बनेंगे, यान का स्ट्रेंथ कितना है, किस चीज़ों में हम उस धागे को इस्तेमाल करें। बहुत सारे कपड़े होते हैं, कई कपड़े हम पहनते हैं, कई कपड़े हम बिस्तर में देते हैं, कई कपड़े हम ओढ़ते हैं, कई हम तिरपाल में यूज़ करते हैं, कई फ्लाइट में यूज़ करते हैं, कई कपड़े शिप में यूज़ करते हैं, बड़े बड़े जहाज़ों में यूज़ करते हैं, बसेस में यूज़ करते हैं, रास्ते में यूज़ करते हैं। तो किस आधार पे करते हैं, वो जानकारी लेना, जो जांच करने की पद्धति है, उसको हम बोलते हैं टेक्सटाइल टेस्टिंग। The objective and importance of textile testing is textile testing has attained the important position in the textile industry. It is just as applicable to the analysis of finished fabric as it is to the raw material. It is useful for the measure of household fabrics as for army fabrics. It is necessary for the cotton spinners in controlling the quality of this product as it is to the rayon producer is controlling quality the product. It is valuable tools in the hand of textiles manufacturer as it is the hand of research technicians. So these are the objective of importance of textile testing. Another part is many from textile all differ in their characteristics just as people differ in personality. Example, yarn may be strong, heat resistant, elastic, etc. The laboratory equipped textile testing is providing ground for the determination, measure, and comparison such standard. It is also necessary to know the other conditions or force influences the result. For example, cotton yarn being hygroscopic is strengthened by increase in moisture content to the understand interrelationship many properties of textile material, knowledge of individual test method, and procedures of essentials. जो रिक्वायरमेंट है, जो कभी भी हम जिस प्रोडक्ट बनाते हैं, उसकी कस्टमर्स हमें रिक्वायरमेंट देते हैं। सपोज एग्जांपल, हम टेलर के पास जाते हैं कपड़ा बनाने के लिए, तो टेलर बोलते हैं भाई पॉकेट 2 लोगे ना 1 लोगे, कॉलर छोटा होगा ना बड़ा होगा, शोल्डर का जो स्टिच होगा वो शोल्डर के नीचे रहेंगे ना ऊपर रहेंगे, लेंथ कितना रहेगा, चाइनीज़ कट होगा ना प्लेन कट होगा।
जैसे हम बोलते हैं ना टेलर को, एक एक प्रोटोकॉल देते हैं कि मुझे किस टाइप की शर्ट चाहिए या किस टाइप की पैंट चाहिए, शॉर्ट लेंथ हो, एंकल लेंथ हो, आप बताते हो। उस टाइम वो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स, अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, कि हाँ मुझे ऐसा ऐसा चाहिए। सेम थिंग जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं फाइबर फैब्रिक, तो हम यार्न से उस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। वो कौन देते हैं, जैसे इंडियन स्टैंडर्ड्स अगर बोले तो BIS बोलते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ऐसे ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स है, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स है, ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स है, एवरी कंट्री हैव देयर ओन स्टैंडर्ड्स। अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूँ ऑस्ट्रेलिया में, तो मैं जो ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं ब्रिटेन में फॉलो कर एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मुझे ब्रिटिश स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं अमेरिका के में करता हूँ तो अमेरिकन स्टैंडर्ड, चाइना में करता हूँ तो चाइना स्टैंडर्ड, जापान में करता हूँ तो जापानी स्टैंडर्ड। तो हर एक कंट्री के अपना अपना स्टैंडर्ड्स है। उस स्टैंडर्ड्स में उनके उनके जो बायर है वो हमें देते, भाई हमें इस टाइप की मटेरियल चाहिए और ये पैरामीटर्स होना चाहिए, ज़रूरी है। तो उस पैरामीटर्स को फॉलो करके हम प्रोडक्शन करते हैं। दिस इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। इम्पोर्टेंस क्या है ना, जो पैरामीटर्स देते हैं उस पैरामीटर को 100% अचीव करना, और उसको दिखाना कि हाँ आपने जो जो चीज़ें मांगे थे हमने वही वही चीज़ें दी है। दिस इज एक्चुअली द उसकी जो टेस्ट करके जो रिपोर्ट है वो एक्चुअली हम टेस्टिंग, टेक्सटाइल टेस्टिंग बोलते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करना, क्वालिटी को मेंटेन करना, दिस इज एक्चुअली कौन जांच करके देंगे ना, टेक्सटाइल टेस्टिंग की, हाँ हमने उसकी पूरी क्वालिटी को मेंटेन किया। जैसे प्रीवियसली अब हम जो आज डिवाइस की डेनिम पहन रहे हैं, तो स्टार्टिंग में जब ये लगभग 90s की बात है, जो फर्स्ट अरविंद मिल ने जब उन्होंने डेनिम बनाना शुरू किया, तो वो डेनिम एक्सपोर्ट के लिए बनाया था कि फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करेंगे। बट वो डेनिम क्या हुआ, वो इतना हार्ड डेनिम बन गए एकदम बोरे जैसे, बोरिया जैसी। तो वो एक्सपोर्ट वहाँ से रिजेक्शन होके आ गया कि नहीं, आप हमने जो क्वालिटी मांगा था वो क्वालिटी आपने प्रोड्यूस नहीं किया, हम नहीं लेंगे। तो पूरा के पूरा फैब्रिक जब इंडिया में वापस आ गया, तो उसी टाइम जीन्स की फैब्रिक मार्केट में सेल हुआ था। लोग वो डेनिम को अपने जैसे रेगुलर पैंट के तरफ बना के बेचे थे। उस कंपनी का नाम था रफ एंड टफ। बट आज टुडे ये जो R&D किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ, उसमें अरविंद आज सबसे बड़े बड़े ब्रांडेड कंपनी की डेनिम बनाते हैं। सेम रिलायंस जो पॉलिस्टर फैब्रिक के लिए उन्होंने एक्सपोर्ट के लिए उन्होंने स्टार्टिंग में, वो 90s के बात है, 86 87 88 ऐसी टाइप की बात है, उन्होंने जब फैब्रिक एक्सपोर्ट के लिए बनाया, ब्रांड नाम था उसका विमल शर्टिंग शूटिंग। तो विमल जब पहले पॉलिस्टर शर्ट्स और पैंट बनाया तो वो अफ्रीकन कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया था। बट उसमें क्या हो रहा था, एयर फैब्रिक के अंदर प्रॉपर सॉफ्टनेस नहीं था, एयर फॉर्मेबिलिटी नहीं था, वो वापस इंडिया में रिजेक्ट होके आ गया। बट इंडिया में वो उन्होंने फिर से R&D किया। जो पुराने फैब्रिक है उन्होंने स्टॉल लगा लगा के हर एक फेस्टिवल्स में उन्होंने सेल किया। और सेल करने के बाद आज जो फैब्रिक रिलायंस बनाते हैं, वो R&D के थ्रू अच्छे अच्छे कंपनीज के लिए, अच्छे अच्छे ब्रांड के लिए वो फैब्रिक तैयार करते हैं। तो इसको कैसे जांच किए कि कहाँ गलती हुआ, तो दिस इज एक्चुअली द प्रोसेस टू अंडरस्टैंड थ्रू द टेक्सटाइल टेस्टिंग। Objective of importance of textile testing is standards are established by the individual organizations. For example, staple length of raw cotton, size of rowing, strength of yarn, number of filaments in the yarn, etc. Textile testing helps to establish scientific specification. Textile testing is also playing a role in analyzing the market requirement or consumer demand. Now his question is what is standard, what are the standards. So standards are international standards, make things work. They give world class specifications for products, service and systems. To ensure quality, safety and efficiency, they are instrumental in facilitating international trade. ISO has, ISO का full form है International Standard Organizations for Standards, International Standard for Organizations. ISO helped published
more than 19,500 international standards covering almost every industry for technology to food safety to agriculture and healthcare. ISO international standard impact everyone one and everywhere. The benefit of international standards bring technological, economic, and societal benefits. They help to harmonize technical specifications to products and service, making industry more efficient and breaking down barriers to the international trade. Conformity to international standards helps um, reassure consumers that products are safe, efficient, and good for the environment. Benefits of standards, the ISO materials. ISO has developed materials describing the economic and social benefits of standards. The ISO materials, they are intended to be shared with decision makers and stakeholders as concrete examples of the value of standards. The fact and figures about the benefit of standards, the responsibility of studies on economic and social benefit standards provided an insight of the approaches and results of the studies undertaken by different authors such as national and international standards bodies, research institute, universities and other international organizations. For business, international standards are strategic tools and guidelines to help companies tackle some most demanding challenges. Modern business, they ensure that business opportunity are efficient as possible, increase progress, help the companies access new markets. Benefit include the cost saving. International standards help optimize operating and therefore improve the bottom line. Enhanced customer satisfaction. International standards help improve quality, enhance customer satisfaction, and increase sales. Access new market. Access to new market. International standards help prevent trade barriers and open up global market. Increase market share. International standards help increase productivity and competitive advantages. Environmental benefits. International standards help reduce negative impact on the environment. So these are the benefit of the standards. So how does ISO develop standards? An ISO standards developed by a panel of experts with a technical committee. हर देश की एक लीडरशिप जाता है. Once the need for standard has been established, these experts met to discuss and negotiate a draft standard. As soon as draft has been developed, it is shared with ISO members who are asked to comment and vote on it. If a consensus is reached, the draft becomes ISO standard. If not, goes back the technical committee for further edit. अगर कमेटी बैठता है, वोटिंग होता है, अगर सब लोग मान लेते हैं, वोट हो जाता है तो उसको स्टैंडर्ड में चालू हो जाता है, नहीं होता है तो फिर फर्दर एनालिसिस होता है उस स्टैंडर्ड्स के ऊपर. Principle of standard development. ISO respond to need the market. ISO does not describe when to develop a new standard. Instead, ISO responds a request from industry or other stakeholders such as consumer group, typically an industry sectors or group communities, the need for standards to its national members who then the contacts ISO. Contact details for national members can be found in the list of members.
The key principle of standard development. Second thing is ISO standards are based on global expert opinion. ISO standards are developed by group of experts from all over the world that are part of larger groups called technical committee. These experts negotiate all aspects of the standards including the scopes, the definition and content. Detail can be found in the list of technical committee. Key principle of in standard development. Third point is ISO standards are developed through a multi-stakeholder process. The technical committee are made up of experts from the relevant industry but also from consumer associations, academia, NGO and government. Read more about who developed ISO standards. ISO standards are based on consensus. Developing ISO standard is a consensus based approach and comments from stakeholders are taken into account. So ISO elements जब स्टैंडर्ड बनाते हैं तो जो 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 स्टेक होल्डर्स है जो टेक्निकल कमेटी है तो इस एलिमेंट के ऊपर ध्यान रखते हैं जब स्टैंडर्ड तैयार किया जाता है. क्या? वन इज मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिटी सिस्टम, कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू, डिज़ाइन कंट्रोल, document and data control, purchasing, control of consumer supplied product, product identification and uh, traceability, process control, inspection and test status, control of inspection, measuring and test equipment, inspection and test status, control of non-conforming product, corrective and preventive action, handling, storage, packaging, prevention and delivery, control of quality records, quality audits, training, service, statistical techniques. These are the ISO elements. तो ये सारे चीज़ें जब जब कोई स्टैंडर्ड्स डेवलप होता है तो ये सारी चीज़ों को फॉलो किया जाता है कि ध्यान में रखते हुए स्टैंडर्ड्स डेवलप किया जाता है. फिर उस स्टैंडर्ड के आधार पे जब हम फर्दर रिसर्च करते हैं तो टेस्ट करते हैं तो इसी स्टैंडर्ड के आधार पे जैसे आप घर पे फ़ैन लेते हो तो दिस इज़ द ISO स्टैंडर्ड. इसका एक नंबर स्विच में ये इसका RPM होगा 1000 साइकिल, इसका 2 नंबर स्विच में इसका RPM होगा 2000 साइकिल, 3 नंबर स्विच में 3000, 4 नंबर में 4000, 5 नंबर में 5000. तो वो ये सारे क्या रैंडम एनालिसिस होता है, रैंडम टेस्ट होता है. टेस्ट के बाद फिर ISO मार्किंग होता है कि हाँ योर प्रोडक्ट कंपनीज प्रोडक्ट इज मेड बाय द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. तभी उसी प्रोडक्ट के अंदर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टैम्प लगाते, रजिस्टर करते. दिस इज एक्चुअली द introduction of standards and how to create standards for the further process. Thank you.